So, welcome, Prachita. Welcome to the podcast. It's a good opportunity. Thank you for having me here. Now, tell us about Kids Chaupal. So, Kids Chaupal, like the name suggests, a lot of North Indian people would be aware about what Chaupal means. It's like a gathering where people from all segments of the society or a neighborhood they gather and they talk about their day-to-day lives. They talk about their experiences. They share folklores. They share their stories, experiences. So it's basically a platform that the people who are participating it have created for themselves. So Kids Chaupal is also a platform for kids and young adults. And this platform, with this platform, we are trying to create an ecosystem where we are trying to tell the kids that there are various opportunities out there, and if they want to create a meaning out of their lives or create a or add a dimension to their lives or to their personalities, then academics is not the only way that they can do it. And we're just trying to change that notion that most of the I mean, the Indian parents or Indian society is obsessed with, that is of academics, and we're trying to change it with the fact that we're trying to give all sorts of opportunities where students can explore themselves and they can be a better version of themselves using these opportunities. Yeah, so we are talking about skills, we are talking about holistic development, and this is basically the overview. And under this overview, we have a lots of offerings that are targeted towards helping the kids to achieve this. Activities or skills or hobbies Kids Chaupal having, or how they're helping the children to do so. So we have the plethora of our offerings is quite extensive. We have various categories in which we have our classes both online and offline. We have internship opportunities within us. We have podcasting opportunities within us. We also help the students to build on their entrepreneurial ideas and build on their employability skills. So, if I talk about skills, we have a lot of segments like fine arts, performing arts, there is academic development, there is personality development, and there is games, and there is technology, there is a sports segment also that we are coming up with very soon. So, it's a very extensive platter, I would say. And in the platter, we just try to add on elements as and when we can, so that just to make it more accessible and so that we can reach out to more and more students or kids, you may say. Okay, so as you know, एग्जाम अभी आ रहे हैं, एग्जाम सीजन चल रहा है. So do you think कि एग्जाम सीजन में जो एक फोटे है किड्स चौपाल का, लाइक स्किल डेवलपमेंट, हॉबी डेवलपमेंट एंड प्लेइंग विद किड्स एंड हेल्पिंग देम टू ग्रो इन अ सर्टन मैनर, सो एग्जाम टाइम पे वो कितना ज़्यादा लोअर डाउन होता है वो पूरा जो सेगमेंट है? Exam time pe, like I started my conversation with that, if I talk about the country or the general demography that we are living in, it's a demography which is obsessed with academics. तो जनरली लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि क्यों ज़रूरी है, मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ हॉबीज़ होना भी. तो जनरल नोशन यही होता है कि नहीं ठीक है, एग्जाम्स का टाइम है तो एकेडमिक्स शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, एंड प्रायोरिटाइज करते करते हम इतना ऑब्सेस हो जाते हैं उस चीज को लेके कि हम समझ नहीं पाते कि वो ऑब्सेशन जो है इट इज नॉट हेल्पिंग अस इन द actual productivity that we are wanting from the academics. So this is the place where hobbies come into play, or where having a productive distraction comes into play. So if a student has a hobby, or if a student has a very particular interest in something, so that can help the student in having a productive time, और where जहाँ पे वो अपना दिमाग पढ़ाई के अलावा भी लगा सकते हैं. एंड इट मतलब जनरली लोग सोचते हैं कि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, बट वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता है, क्योंकि इट हेल्प्स योर ब्रेन टू स्टिमुलेट. मतलब आपका ब्रेन, जब आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एकेडमिक्स ही सोच रहे हो, तो आपका ब्रेन भी कहीं ना कहीं इट गेट्स यूज टू दैट पैटर्न. So if you change that pattern and if you do something else, or if you train your brain to focus on something else, it just stimulates your brain. तो जब आप वो ब्रेक लेके आप जब फिर से एकेडमिक्स पे आते हो, तो योर ब्रेन वुड हेल्प यू नो फंक्शन इन अ बेटर वे. तो तब जो आप पढ़ोगे तो शायद वो आपको
ज़्यादा इफेक्टिवली समझ में आए. So is there any kind particular duration of hobbies that you are playing या आप किस तरीके से work करते हो? No, there is no particular duration. I mean, it depends on what we are actually trying to do. Suppose if I'm talking about a course on mandala and someone who's starting with the very basics of mandala, then it would be a 2 months course that we are talking about. In a day, like what, how much duration in a day? Because exam time में पेरेंट्स बच्चों को उतना देर तक नहीं रहने देते हैं बाहर, बिकॉज कि एग्जाम पे फोकस चाहिए और एग्जाम टाइम है. So what is your day schedule like with the kids, like while going examination? During day, we just suggest that a time limit of somewhere between 60 to 90 minutes is a good enough time to prioritize the hobbies as such, and where you can take a good amount of distraction from your academics and आप hobbies पे focus करो. And then obviously study breaks should also be taken. अगर आप academics या exams के लिए study कर रहे हो तो we don't recommend, or what we feel is that it should not be a continuous or a very long stretch of time that you are putting in for any sort of academics. You should keep taking small breaks within, and you should take a proper 1-1.5 का break जहाँ पे आप अपने hobby पे थोड़ा सा focus करो, which will again, like I said, will help you simulate your brain. Okay, so now there's some set of questions that I'm going to ask you regarding the hobbies and how you guys are helping, or how actually hobbies help children. So first question is, what role do hobbies play in reducing student stress during exams? Yeah, so hobbies is it's more than what we think of a hobby is. Matlab, hobbies is not just something that we do to pass our time. Hobbies have a very they add a very constructive meaning to a student's life, because academics में क्या होता है, everything is being evaluated in terms of or assessed in terms of marks. मतलब अगर आपके marks अच्छे आ रहे हैं मतलब you are doing good, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो यू आर नॉट डूइंग गुड. बट वी ऑफन फॉरगेट दैट एक इंडिविजुअल में, एक पर्सन में एक ऐसा पोटेंशियल होता है जो हमेशा मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उसको मेजर किया जा सकता. सो व्हाट हॉबीज हेल्प इन की, हॉबीज जो वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है, दे हेल्प टू establish that sense of accomplishment in the students or any individual who is doing it. So suppose if someone's hobby is gardening, and हो सकता है कि academics में वो बच्चा इतना ज़्यादा अच्छा ना कर रहा हो, या अगर अच्छा कर भी रहा हो तो शायद वो उसके आसपास के लोगों के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, तो उसे शायद लग रहा हो कि यार आई एम नॉट डूइंग गुड इन लाइफ जनरली, और आई एम मिसिंग आउट ऑन सर्टन थिंग्स, और आई नीड टू डू बेटर. लेकिन अगर वो गार्डनिंग, अगर उसके पास एक हॉबी है जिसको वो परस्यू कर रहा है, तो उसको वो नर्चर कर सकता है. एंड व्हेन ही सीज द रिजल्ट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हॉबी, अगर गार्डनिंग करके वो एक छोटा सा किचन गार्डन या फिर एक मतलब 2-3 प्लांट्स ही अपने बालकनी में अगर ठीक से वो मेंटेन कर पा रहा है, तो जब वो उन प्लांट्स को रोज ग्रो करते हुए देखेगा, it will give him a sense of confidence, a sense of accomplishment, which will help add a lot of meaning to his life, and it will give him confidence to maybe take up the challenges that he is otherwise afraid to deal with. So that is the essence of hobbies, is what we feel, that it's just not a pastime that we quite often refer to hobbies as कि मतलब तुम्हारा पास टाइम क्या है और तुम्हारा हॉबी क्या है, तो it's not the same thing. Hobbies are a greater section than just pastime. Pastime अगर आपको करना है आज के दिन में तो आप Instagram scroll करके भी अपना टाइम पास कर सकते हो, लेकिन hobby has a much more deeper meaning than pastime. So having a hobby will help you have a good perspective towards everything. Having a hobby would help you have इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आप समझ सकते हो चीज़ों को, हाउ थिंग्स वर्क, एंड ऑफ कोर्स आपका अपने पे कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है, एंड सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है, एंड of course you feel like that you're creating something, and when you know that you are able to create something, उसका जो confidence होता है या उसका जो sense of individuality होती है वो it's unmatched.
is what we feel, and we try to advocate that in as many cases as possible. So So do yeah. you, so do you have any stories, any success stories where you help a child to lower down their stress by helping them? Yeah, right. So it's not actually, I mean, the first example that I would give is not actually a hobby related example, but it's also like how having a direction in life helps. So we had a student, and he was he had just given his 10th examination, and um when his parents reached out to us, and we got to know that the kid is a really introverted kid, and he had confidence issues, and he had communication issues, and basically the parents were very confused as into क्या opt करना चाहिए after 10th for a career, और मतलब career तो चलो बात की बात है, they just wanted the kid to get out of his shell basically. So they opted for certain courses with us, and they also opted for a career counseling session with us, and the kid also opted for a course, I think, in mandala, I think, and both of these courses he was doing together. And after the courses, or during the courses itself, our counselors could see an improvement in him, because when I'm saying improvement, it actually meant improvement, because in the first session that he joined us, he did not speak at all. When the teachers tried to interact with him, he was not at all interested to be in the session, first of all. So he just said कि मुझे बोला गया है तो मैं रहूंगा सेशन में, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें. So our teachers or our counselors work towards him, and मतलब by the end of the course, or by the end of the actual number of sessions, we could actually see the difference where he made a connection with the teacher actually who was teaching it, and he could actually arrive at a conclusion also, like what he wanted to do with life, and what his approach towards life should be. क्योंकि 10th के बाद आप एकदम से तो जो भी डिसाइड करोगे, इट डज नॉट मीन कि आप वही करोगे इवेंचुअली लाइफ में. बट अगर आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आप उसी को बिल्ड कर पा रहे हो ड्यूरिंग दीज सेशंस, and if you feel like that you have understood yourself properly, I think that's one of the biggest achievements that anyone can have. And we had that experience with that kid, and it was a really fulfilling day for all of us at Kids Chaupal, and we felt like ठीक है, the work that we are doing is creating a good impact somewhere. So yeah. Okay, so what is the procedure at Kids Chaupal if someone wants to come in and if someone don't know कि मेरा interest क्या है? So we have our counselors, and they they will reach out to you. They'll first try to understand what's your background, and what actually they will try to through the conversation, they'll try to understand, or they'll try to ascertain like what actually is the thing that you're looking for. So sometimes it's just like I was telling you कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स को सिर्फ ये चाहिए होता है कि एकेडमिक्स से रिलेटेड कुछ करवा दे, जिससे कि डायरेक्टली एकेडमिक्स पे इफेक्ट हो जाए. कभी कुछ पेरेंट्स को चाहिए होता है कि नहीं, कोई स्किल ही जनरेट हो जाए, जैसे कि अगर बच्चा आर्ट में अच्छा है, उसको पेंसिल स्केचिंग अच्छे से आ जाए. कभी ऐसा होता है कि चेस खेलना अच्छे से आ जाए, सो दैट इट कैन ऑल्सो हेल्प इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या रूबिक्स क्यूब आ जाए जिससे कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो जाए. तो आवर काउंसलर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है दैट what parent thinks is needed for the kids is not absolutely the right thing. So we try to tell them, we try to give them directions कि अगर ऐसा है, अगर कोई बच्चा है जिसकी personality is a certain type, तो और हुआ है हमारे साथ ऐसा, where we have seen that the kids parents are coming up to us saying कि we want the kid to learn the concepts of abacus. Okay, but when we got to know मतलब थोड़ा डिटेल में जब हम गए, when we got to when we asked like what's the kid like, and what's the personality like, or what are their likes or dislikes, the kids likes and dislikes, we got to know that the kid is very introverted, and he is hardly communicating with anyone. तो एक मतलब कि वही बात है कि एक शेल में है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है एंड एवरीथिंग. सो वी सजेस्टेड देम टू गो फॉर थिएटर कोर्स.
सो ओके। थिएटर में क्या होता है, यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम होता है, आप अपने थॉट्स को और ज़्यादा एक्सप्रेसिव आप कैसे हो सकते हो, उन चीज़ों पे काम होता है, एंड you get to understand yourself the most. So they opted, and we try to suggest them in that way कि जिस कोर्स का जो टेक अवे होता है उसके हिसाब से हम उसको सजेस्ट करें. That is what we suggest for. Okay, so do you guys specifically like recommend any hobbies if someone wants to lower down the exam stress? Because exams हो रहे हैं और एग्जाम्स के टाइम पे इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू सो आपका वहाँ पर भी टाइम लग रहा है. सो डू यू गाइज रिकमेंड समथिंग कि अगर आप ये वाली हॉबी कर रहे हो या इफ यू आर डूइंग सम दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद योर लाइफ और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तो जो आपका वो एग्जाम का एक स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा. Right. So again, it depends on the person who's coming up, because सबका situation same नहीं होगा. हो सकता है कि कोई है जिसको exam stress already handle करना आता है, and they just want to know learn it for the sake of learning it, and there might be someone who just actually wants to lower down their stress, and that is why they are coming up for this. So it is very subjective. It depends on the situation, but at the large, all our courses are somehow aimed at creating that situation जहाँ पे आप बिना किसी stress के उस मतलब you look forward to attending that session, not because of compulsion but because you want to. So most of our courses are aimed at that only. So it is again a situation based thing that happens. मतलब generic तरीके से हम अगर बोलना चाहे तो फिर there would be mandala that can help, because mandala helps you, it's a meditative art. तो जब आप सेम पैटर्न को बार बार क्रिएट करोगे तो जो आपके दिमाग में भी नॉट्स हैं और दिमाग में जो क्लटर्स हैं, दैट ट्राइज टू ओपन एंड आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलता है. देन देयर इज थिएटर, जहाँ पे अगर आपके अंदर बहुत सारे सप्रेस्ड थॉट्स हैं या फिर सप्रेस्ड इमोशंस है, you learn how to bring them out. So like these all our things are there, and मतलब कि these are from generic point of view. Maybe हो सकता है किसी के लिए चेस भी थेरापेटिक हो सकता है उसको चेस खेलने से एक एज मिले या फिर उसको उसके दिमाग को शांति मिले, तो देन दैट बिकम सब्जेक्टिव. सो आई जस्ट गिव यू 2 एग्जांपल्स फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग व्हिच कुड बी जेनरिक, बट देन अगेन आई थिंक it depends on the person who's pursuing it. Next question is how students can balance their academic responsibilities with their hobbies during exams time. Yeah, so I think creating a balance is the key here, and they need to understand that priorities को balance करके चलना ज़रूरी है, because eventually अगर आपको academics में अच्छा होना है तो you need to have peace of mind. मतलब क्योंकि अगर आप सोचो कि आप बस पढ़ते रहो, दिन भर पढ़ते रहो एंड आप एग्जाम में जाके वो उड़ेल दोगे, तो इट नेवर वर्क्स दैट वे. यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या आप कर रहे हो, सो दैट यू हैव दैट रिटेंशन पावर ऑल्सो. मतलब कि अगर आप 3-4 दिन पढ़ रहे हो फिर 5वें दिन आपका एग्जाम है, तो इट्स नॉट नेसेसरी ना कि जो आपने पहले दिन पढ़ा वो आपको 5वें दिन तक भी याद रहे, मतलब डिस्पाइट ऑफ ऑल रिविजन्स एंड एवरीथिंग. सो stimulation of brain is important, and उसके लिए hobbies are important. So it's very necessary to understand that there has to be a balance, be it exams or not. आपके लाइफ में एकेडमिक चीज़ों का और को करिकुलर या हॉबीज़ का एक बैलेंस होना ज़रूरी है, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम उसको प्रायोरिटाइज करोगे तो इट वोंट हैम्पर यू. तो अगर आपके एग्जाम्स के टाइम है और अगर आपका दिन भर में आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, तो डू इट इन 2 आवर्स फेजेस. मतलब आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो फिर आप 15 आवर्स का ब्रेक लो, फिर 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 15 आवर्स, इन बीच में एक बड़ा सा गैप लो आप 1-1.5 घंटे का, जहाँ पे आप कुछ नया सीख सकते हो, कोई बुक पढ़ सकते हो, एंड यू कैन जस्ट मतलब कि कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो. अगर आप गार्डनिंग करते हो तो गार्डनिंग करो, योगा कर सकते हो तो आप योगा करो. तो उससे क्या होगा कि you'll have some distraction also, and आपका दिमाग थोड़ा और खुलेगा बेसिकली. मतलब जो आप शायद पढ़ के उसको थोड़ा कंप्रेस कर रहे हो, that thing will get expand and which will help you in the longer run for the academics also. So what advice you want to give to them? Maybe new age parents फिर भी थोड़े understanding हैं because they know how to cope up with this. But still there are parents जिनको शायद इतना exposure नहीं है या उनको इतना पता नहीं है.
So what advice you want to give to them? So, on behalf of Kids Chaupal, or on representing Kids Chaupal, what I would like to suggest to the parents is like that these examinations are only a part of their kids life. It's not their entire life. मतलब कि अगर उनके बच्चों के लाइफ में एग्जाम्स हैं तो वो उनके बच्चों की लाइफ का एक हिस्सा है. मतलब उनकी पूरी जिंदगी ही उस एग्जाम्स पे नहीं टिकी हुई है. क्योंकि अगर वो एग्जाम्स में अच्छा, आई थिंक पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस बच्चों को दिलाना चाहिए कि ऑफ कोर्स, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो मोटिवेट ना करे अपने बच्चों को या फिर वो ये बोलें कि मत पढ़ो, लेकिन एक्सट्रीमिटीज में कुछ भी करना might not be that helpful for their kids. I mean, they should give the students or give their kids the confidence that you give your best, and no matter whatever the outcome is, we are there with you, and we have that trust on you कि outcome चाहे जो भी हो, you'll create a good life for yourself. तो जब वो कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है अपने पेरेंट्स से, तो वो अगर आई थिंक वो थोड़ा ऑप्टिमाइज भी हो जाते हैं अपने परफॉर्मेंस की, क्योंकि दे फील दैट स्ट्रेंथ कि चलो ठीक है, इफ वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट माय पेरेंट्स आर विद मी एंड मैं कुछ कर लूंगी या मैं कुछ कर लूंगा. तो दैट हेल्प्स देम टू अवॉइड द स्ट्रेस फैक्टर विच इज वेरी ऑफन connected to examinations, which should not be the way, because examination is essentially testing your knowledge. तो आप knowledge पे काम करो rather than concepts आप रटो. तो उस चीज को पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए. And I know it's easier said than done, and parents have their own sets of concerns for their kids because every parent want their kids to excel in life. And I totally respect that because my parents also did the same for me. But I also feel that थोड़ा सा अगर हम अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, थोड़ा सा अगर हम अकोमोडेटिव हो जाते हैं एज अ पेरेंट एंड स्पेस देते हैं बच्चों को, तो दे विल बी एबल टू डू मच बेटर देन दे आर डूइंग. सो या, दैट विल बी. एंड ऑफ कोर्स अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे कैसे एक्सप्लोर करेंगे अपने आप को, तो किड्स चौपाल है, and you can always look up to our platform to see the things that the kids can excel in apart from academics, and I'm sure it will add a very good meaning and a very impactful meaning to their lives. जो ये 10th 11th 12th वाली एज होती है, ये बहुत टेंडर एज है. इस टाइम पे बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि लुक्स को लेकर, पर्सनालिटी को लेकर, नंबर्स एंड एवरीथिंग. सो दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस. सो व्हाट एडवाइस डू यू गिव टू देम जिनके भी एग्जाम्स हो रहे हैं एंड दे आर वे टू स्ट्रेस्ड अबाउट कि पता नहीं क्या ही होगा, मेरे को आगे एडमिशन नहीं मिलेगी, मेरे करियर के साथ क्या होगा. क्योंकि हम ये चीज़ हम फेस कर चुके हैं, सो वी नो कि वो सिर्फ फेस था. एंड आई थिंक 12th के एग्जाम्स कहीं मैटर नहीं करते, 10th के एग्जाम्स कहीं भी मैटर नहीं करते. एडमिशन से मैटर करते हैं, बट एट द एंड मैटर वही कर रहा है कि आपके पास नॉलेज कितनी है किसी भी सब्जेक्ट की. सो व्हाट एडवाइस डू यू वांट टू गिव टू देम कि स्ट्रेस लेना इज नॉट ज़रूरी है आपको उसको कैटर करना. So at this tender age, what advice you want to give to them? I would tell them to believe in their individuality, क्योंकि दो लोग कभी भी सेम नहीं होते. I mean, अगर यहाँ पे हम दोनों हैं तो हम दोनों के लाइफ में भी मतलब शायद कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो, लेकिन हम दोनों की जर्नीज अलग है, हम दोनों के डेस्टिनेशंस अलग है. तो I can only tell these all the students who are maybe listening to this that believe in your process, believe in your path, and believe in your individuality. I mean, अगर आप कुछ चीज़ अलग हो रहा है आपकी लाइफ में, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि it is supposed to and it will take you to somewhere. And हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम पहले ही फिगर आउट कर लें कि हमें कहाँ जाना है. कभी कभी हम लोग स्टम्बल करते करते भी करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं. तो I would just tell them to believe in themselves and believe in the process also. And when you're giving your best, तो उसका आउटकम कहीं ना कहीं दिख ही जाता है. If not today, then tomorrow, because I mean, life is fair in that sense. मतलब contrary to what we feel कि नहीं है, unfair है, लेकिन हो जाता है at the end of the day. If we are honest in our efforts, तो we get the outcomes also in some. Then I think हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हो ही जाता है. मतलब एट द एंड वही वाली बात है कि पिक्चर अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि पिक्चर अभी बाकी है. And end is generally end, मतलब शायद ये बहुत philosophical लगे सुनने में, लेकिन end is also, you cannot call anything an end, क्योंकि अगर उस टाइम पे कुछ end हो रहा है तो कुछ शुरू भी हो रहा है उस टाइम से. So
Belief is, I think, crucial, and वही believe in yourself and believe in the process that you are in, and जिस process में आप हो या जो आपकी journey है वो आपके लिए ही बनी है, so you make the most of it. I think that is And important I to think perspective towards life and perspective towards exams also there कि yeah, आप जिस टाइम पे जो कर रहे हो वो फोकस करके करो। अगर आप 1 घंटे के लिए हॉबी कर रहे हो, आप डिस्टेंस absolutely आप कुछ भी कर रहे हो उसको फोकस के साथ करो तो आप उसको एंजॉय करोगे। अगर आप enjoy 24 into हाँ 7 हर चीज को अंदर ही गैम्बल अप कर दोगे कि ये भी होना है ये भी होना है, तो वो एट हाँ द and एंड तो वो ये बहुत भी हाँ, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब पूरे दिन ही लगे रहना है पढ़ाई के लिए, तो ही आप इफ़ेक्टिव करोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मतलब मैंने बहुत बार देखा, मैंने अपने साथ भी देखा था व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, दैट समटाइम्स a 2 hour of quality study is much better than lingering on for 6 hours and then doing it. तो ट्राई टू एनालाइज व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। हो सकता है कि आप 2 घंटा मन लगा के पढ़ रहे हो और उससे जितना आपको हेल्प हो रहा है शायद वो 6 घंटे की पढ़ाई में भी नहीं हो रहा है, या हो सकता है किसी के लिए 6 घंटे ही मैटर करे। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, लाइक व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड यू डू इट अकॉर्डिंगली। इट डजंट नेसेसरली मीन कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो आपको भी 5 घंटे ही करना है। हो सकता है कि आपका 3 घंटे में काम बन जाए। तो don't compare yourself with anyone for anything, and just trust that आप जो हो आप खुद में enough हो, and that trust will take you a long way. ओके, सो थैंक यू सो मच प्राचिता फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड आई होप इस इंटरव्यू से काफ़ी सारे पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को ये समझ में एटलीस्ट आएगा कि एग्जाम्स डरने की चीज़ नहीं है। एग्जाम सिर्फ नॉलेज टेस्ट कर रहा है कि जो पूरे साल आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो अगर आपने मस्ती किया तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और अगर आपने मेहनत की तो उसका रिजल्ट भी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू किड्स चौपाल ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। Thank you, Surbi. Bye bye.